खुदा बख्श में भेटा ॾियण जे लाइ भेटा पेश करण जे लाइ तव्हां निकिरी रहियो आहे। तव्हांजी अॻुवाणी में कारकुननि जो जोश जज़्बो ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी वरसी हवाले सां छा चवंदा? ॾिसो, तव्हांखे ख़बर आहे त पाकिस्तान में अॼु अगरि जमहूरियत जो जेको सिलसिलो हले पियो त उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जी क़ुर्बानीनि जे करे इहो जमहूरियत जो सिलसिलो मज़बूत थियो आहे ऐं इहा जमहूरियत वधीक अञा माण्हुनि में जोश जज़्बो ऐं हिन जमहूरियत जे करे इहा शइ अवाम में जोश जज़्बो जेको तव्हां ॾिसो था हिन जमहूरियत जे करे ई आहे ऐं इहा जमहूरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जी क़ुर्बानीनि जो सिलसिले जो हिकिड़ो जेको आहे उन जे करे आहे। इहा क़ुर्बानियूं शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टे खां वठी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ताईं अॼु ॾींहं ताईं इहे क़ुर्बानियूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ ॾियूं ऐं ॾेई रही आहे। त अवाम खे बि ख़बर आहे त अगरि जमहूरियत पाकिस्तान में मज़बूत थी आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़ुर्बानी जे करे थी आहे। तव्हां ॾिसो था लखनि जी तादाद में पूरे मुल्क मां माण्हू पंहिंजे क़ाइदनि खे ख़िराज अक़ीदत पेश करण लाइ उते वञी रहिया आहिनि ऐं इहो हर साल वांगुरु सिर्फ़ु 27 दिसंबर जो न पर तव्हां सॼे साल ॾिसंदा त दरगाह ते हाज़िरी माण्हू भरीनि था, कारकुन वर्कर न सिर्फ़ु वर्कर न पर पाकिस्तान जा आम शहरी उते अचनि था त उहे अची करे ॾिसनि था त भई हीअ पाकिस्तान जे लाइ लाजवाल क़ुर्बानियूं जे अवाम लाइ ॾिनियूं ऐं अवाम बि उन्हनि जी क़ुर्बानीनि जे पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टीअ खे पसंदि करे थी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जो मोहबत जो सिलसिलो जारी रहंदो। ही हैदराबाद मां जेको काफ़िलो निकिरे पियो हर साल वांगुरु, इन हवाले सां ॿुधायो केतिरो तइदाद में कारकुननि में केतिरो जोश जज़्बो आहे? ॾिसो, हज़ारनि जी तादाद में हितां हैदराबाद मां अलहमदिल्ला राति खां वठी काफ़िला निकिरणु शुरू थी विया आहिनि त सभिनि जी असीं ॾिसी रहिया आहियूं जेके बि हितां वञी रहिया आहिनि कोशिशि करे रहिया आहियूं उन्हनि सां कॉन्टेक्ट में भई को मसइलो थिए या छा थिए त उहे लखनि जी तादाद में हज़ारनि जी तादाद में हितां वञी रहिया आहिनि माण्हू ऐं उहे इनशाला हुते गड़ी ख़ुदा कुझु पहुची विया आहिनि ऐं कुझु जो सिलसिलो जारी आहे, कुझु हितां निकिरनि पिया हाणे त हुते पहुचण खां पोइ हुते जेको चेयरमैन साहिब जो ख़िताबु ॿुधिबो ऐं हुते दुआ थींदी मोहतरमा जी दरगाह ते त इहो ॾिसंदा त पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जा कुझु काफ़िला हितां 2-3 ॾींहं खां पोइ हुते पहुतल आहिनि त इहो हैदराबाद जी आवाम जो हमेशह मोहबत आहे, ख़ाली हैदराबाद न पूरे पाकिस्तान जी मोहबत आहे। इनशाला इहा मोहबत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते जारी रहंदी ऐं जमहूरियत लाइ जे क़ुर्बानी ॾिनो उन्हनि सां साथ आवाम जो पूरे पाकिस्तान जो ईअं ई मज़बूत रहंदो त इनशाला पाकिस्तान तरक़ी कंदो रहंदो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। हैदराबाद हमेशह साबित कयो आहे त हैदराबाद पीपल्स पार्टी जो क़िलो रहियो आहे ऐं जेके बि जलसा हुजनि जुलूस हुजनि हैदराबाद हुजनि कराची हुजनि पर हीअ त हिकिड़ी अलॻि शइ आहे। हीअ जंहिं क़ुर्बानीनि जो सिलसिलो आहे उन्हनि खे भेटा पेश करण लाइ हैदराबाद जी आवाम त हूअं ई वेंदी आहे पर हींअर क़ुर्बानीनि खे भेटा पेश करण लाइ वञी रहिया आहियूं। बाक़ी हैदराबाद त हूअं ई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो क़िलो आहे। कारकुनों का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भेटा पेश करने के लिए क्या कहेंगे? जी, पूरे पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग गरीब खुदा बख्श जा रहे हैं क्योंकि बेनज़ीर मैं समझता हूँ एक अजीम लीडर थी जिनकी मिसाल आपको नहीं मिलती है। मुसलमान मुल्कों की पहली वज़ीर आज़म थी जो वज़ीर आज़म बन के उन्होंने जमहूरियत को मजबूत किया, अवाम के लिए जद्दोजहद की और कुर्बानी दी। वो कुर्बानी और उनकी मोहब्बत अवाम से लोगों के दिल में रहेगी और जब तक ये दुनिया है शहीद बेनज़ीर भुट्टो को याद रखा जाएगा। भुट्टो साहब सां नंढपण में असां मुंहिंजो प्राइमरी जेका आहे मुंहिंजी आहे नवतरे जी ऐं भुट्टो साहब सां असां हिकिड़ी आख़िरी जेका नमाज़ असां पढ़ी उन खां पोइ मोहतरमा सां असां निभाईंदा अचूं पिया। मोहतरमा सां असांजी ज़िंदगी असांजी जान जेसिताईं असां ज़िंदा आहियूं मुंहिंजो हलफ़ ख़्यालु आहे त जेसिताईं आउं ज़िंदा आहियां तेसिताईं मोहतरमा जी पार्टी सां निभाईंदासीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी जेका 27वीं वरसी आहे इन ते त इलाही पाण जहिड़ा कारकुन जेके पाण पुॼनि था ऐं उहो चाहे अगरि कंहिंखे न बि चवे तॾहिं बि उते पुॼनि था। तव्हां हिकिड़े हिकिड़े माण्हू खे ॾिसो कीअं त अखियुनि में लुड़क आणनि। शेजराणी असां खां विछड़ी कोन्हे, असां सां गॾु आहे, असांजे दिलुनि में गॾु आहे। असांजी वरतियूं असां खां पोइ असांजा ॿार बि मल्हाईंदा पिया। ख़राज अक़ीदत पेश करण लाइ लाड़काणे वञी रहिया आहियूं। मेयर काशिफ अली शोरो साहिब जी निगरानी अॻुवाणी में असां हितां वञूं पिया शोरो हाउस PA कासमाबाद खां। हमेशह वांगुरु हज़ारनि जी तइदाद में माण्हू गॾु आहिनि हींअर बि रैली सां ऐं इनशाला लुड़कनि जी भेट सां गॾु असां मोहतरमा खे अक़ीदत जा गुल निछावर करण लाइ लाड़काणे वञी रहिया आहियूं। महिरबानी।
آج لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان سے جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دی گئی، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کی طرف سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج تک یہ قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پورے پاکستان سے لوگ مزار پہ جا کے اپنے جو شہید ہیں ان کو لازوال قربانیوں کے لیے کی وجہ سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ हलो हलो लाड़काणे हलो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी वर्सी ते असांजे मेयर हैदराबाद काशिम शोरो साहब जे अॻुवाणी में काफ़िला हली रहिया आहिनि ऐं मेयर साहब अॻियां अॻियां असीं पोयां पोयां सदाईं जीए भुट्टो जीए बेनज़ीर भुट्टो जीए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जीए सरदार जाम खान छोरो जीए सरदार काशिम चंद छोरो। हथ हेठि करे हथ हेठि करे शीशो कोन ॾिसणो हुजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میرے پیارے پیپلو، پاکستان کی عوام، پاکستان، السلام علیکم، جی بھٹو۔ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، میری فرسٹ لیڈی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ، پی ایم آزاد جموں اور کشمیر، سی ایم سندھ، سی ایم بلوچستان، اور میرا بھائی محسن نقوی، رسپیکٹڈ جرنلسٹ جو آئے ہوئے ہیں پورے پاکستان سے، پی 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 کے لیڈرشپ، سیکرٹری جنرل، سیکرٹریز، پیپلز پارٹی کے جیالو، سارے پاکستان سے جو آئے ہوئے ہیں، ان سب کو خوش آمدید گڑی خدا بخش میں۔ اور دوستو، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ دن ہماری بی بی صاحبہ کی شہادت کا اور پاکستان کو پیپلز پارٹی کے بچانے کا دن تھا۔ اس دن پیپلز پارٹی نے پاکستان بچایا تھا، پاکستان کھپے کہہ کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، یہ پیپلز پارٹی کی اور بی بی صاحبہ کی روح کہہ رہی تھی جو میں نے کہا۔ الحمدللہ پاکستان بچا، پاکستان چلا اور چلتا رہے گا قیامت تک۔ اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم نے ایسا چیف بنایا فوج کا جس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہماری گورنمنٹ کی سپرویژن میں انڈیا کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ان کو پتہ پڑ گیا کہ یہ کھیڈ نہیں ہے، وانیا دی سمجھے۔ مودی کو پتہ پڑ گیا کہ یہ مذاق نہیں ہے، پاکستان پاکستان ہے اور ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی دفاع کرنا جانتے ہیں۔ یہ تو شکر کرو، ابھی بھی لوگوں نے تمہارا لحاظ کیا ہے، دنیا نے تمہارا لحاظ کیا ہے۔ اگر نہیں تو پتہ لگ جاتا ان کو، سب ان کے سارے جہاز گرا سکتے تھے ہم، ان کا وکرم گرا سکتے تھے۔ مگر دعا کریں کہ یہ حاجی صاحب نے، ہمارے چیف نے، ہمارے ایئر فورس چیف نے ان پہ رحم کیا تھوڑا سا۔ مگر انشاءاللہ اگر دوبارہ کسی میلی آنکھ سے کسی ملک نے بھی دیکھا پاکستان کی طرف، تو یاد رکھو کہ یہاں اسد زرداری بیٹھا ہوا ہے، یہاں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، یہاں بھٹو صاحب کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں، یا بی بی صاحبہ کے وارث بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب ورکر، یہ سب ہم جنگ کے میدان کے لیے خود تیار ہیں، ہم خود ہتھیار لے کے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اس ملک کو، اپنے مادر وطن کو بچانے کے لیے۔ تو یہ بھول جاؤ کہ روٹی ہوگی گولی ہوگی، روٹی ہوگی گولی ہوگی، ہم گولیاں ماریں گے، تم کیا گولی مارو گے؟ اور تم نے دیکھا کہ 4 دن تمہاری ٹانگیں نہیں کھڑی ہو سکی، 4 دن تم جنگ نہ کر سکے۔ اتنی بڑی اکانومی، 10 گنا ہم سے بڑا ملک اپنے آپ کو کہلاتے ہو، مگر وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے جو ہمارے چیف کا ہے، جو ہمارے پریزیڈنٹ کا ہے، جو ہمارے پی ایم کا ہے، جو ہمارے چیئرمین کا ہے، جو ایئر فورس چیف کا ہے، جو آرمی چیف کا ہے؟ یہ دل گردہ کہاں سے لاؤ گے؟ اس کے لیے دل چاہیے، اس کے لیے جان چاہیے، اس کے لیے شہادت کی امید رکھنی ہے، اس کے لیے شہادت کی دعا اپنے لیے کرنی ہے۔ میرا ایم ایس ادھر ہی ہے، اس نے آ کے مجھے کہا کہ سر وہ جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ ویسے تو میں نے اس کو 4 دن پہلے بولا تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، مگر اس نے مجھے آ کے کہا کہ سر وہ بنکر میں چلے۔ میں نے کہا شہادت آنی ہے
तो यहाँ ही आएगी। बंकरों में नहीं मरते लीडर, मैदान में मरते हैं, यहाँ नहीं मरते बंकरों में बैठ के। तो ये सोचें कि हम सब तैयार हैं, अगर दोबारा कभी भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, कभी भी हमारी धरती माँ को जरूरत पड़ी, तो हम अपनी सब जान माल धन सबको लगाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान को संभाल के, बीबी का पाकिस्तान समझ के, जुल्फकार अली भुट्टो का पाकिस्तान समझ के, हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान समझ के हमने बचाना है, चलाना है, रखना है। और आप सबको भी बचाना है। कभी भी जब भी मैं जेलों में गया, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे वर्करों को बाहर निकालो, मैंने ये कहा वर्करों को अपना ख्याल करो, तुम बच के रहो, मैं इनको खुद ही अकेला मुकाबला करूंगा। और ये सोच, ये फिक्र, ये दिमाग, ये दिल मुझे बीबी साहिबा से मिलता था कि बीबी साहिबा कहती थी कि मैं अकेली इन सब के लिए काफ़ी हूँ। तो हम सब पीपल्स पार्टी, हम अकेले ही दुश्मनों के लिए काफ़ी हैं। ये कभी ना दुश्मन सोचे। हमने तब भी झंडा पाकिस्तान का लगाया था जहाँ बीबी ने हुक्म किया था। हम आज भी उस झंडे के साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। हमारी आने वाली नस्लें भी चलती रहेंगी। किसी का दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चों को ऐसी जगहों में डाले जो हमारे यहाँ जंगें हैं, मगर हमें कोई डर नहीं लगता। हम कहते हैं कि हमारी आने वाली भी नस्लें लड़ेंगी, उससे भी आने वाली नस्लें लड़ेंगी अगर ज़रूरत पड़ी। हम जंग के शौकीन नहीं हैं, हम किस मुल्क से लड़ना नहीं चाहते, मगर अगर कोई हमारी साथ हमारे गिरेबान में हाथ डालेगा तो हम उसको 2 पी 50 मारेंगे, जिस तरह हमने इंडिया को मारा था। अब इनको भी मारेंगे। जो भी हमारी धरती की तरफ नासूर आंखों से देखेगा, जो भी देखेगा, तो हमारा ऐसा चीफ बैठा है कि उनको वो चने चबा देगा। पाकिस्तान की आर्मी उनको चने चबा देगी और एयरफोर्स चने चबा देगी, हमारी नेवी चबा देगी। ये सब बीबी साहिबा ने और हमने पहले से ही बंदोबस्त करके रखे हैं। भुट्टो साहब से लेके आज तक हम इस दिन की तैयारी करके बैठे हैं कि हो सकता है कभी हमारी ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है हमें किसी से लड़ना पड़ जाए। तो अल्लाह का फजल है, इतनी सोच हम में है और इतनी समझ हम में है कि हम पाकिस्तान का दिफा कर सकते हैं। और जब तक हम में दिफाई ताकत नहीं होगी तो दुश्मन हमेशा हमारे तरफ मैली आंख से देख सकता है। तो डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस। हमने डिफेंस रखा है ऐसा कि उससे अच्छा ऑफेंस नहीं हो सकता। जब वो हमला करने आए तो हम पहले आसमानों में इनका इंतजार कर रहे थे। उनको तब पता पड़ा जब उनको सामने पाकिस्तान एयरफोर्स नजर आई, उनको तब पता पड़ा जब कमांड दे दी गई थी कि शूट देम डाउन। तो अल्लाह का फजल है, मौला का करम है। हाँ, मुल्क को तकलीफें हैं, मसले हैं, वो आस्ते आस्ते कम होंगे, इसलिए कि एक बेवकूफ़ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब करा दिए थे, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करा दी थी। अभी हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। और मज़े की बात है कि इन ताल्लुकात में हमारे साथ जनरल आसिम मुनीर साथ हैं। और आज ट्रम्प भी कहता है कि फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल आपने उसको बनाया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है, पाकिस्तान की आवाम ने बनाया है। तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र सोइए, आपके बच्चों का, आपके आने वाली नस्लों का भी मैं ज़ामिन हूँ। इंशाल्लाह सबके लिए बेहतरी करके जाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
बताऊँ।